Hello everyone, welcome to our today's lecture, that is the introduction to Java programming. So as we have taught you all in the last previous lectures, the concept of object oriented programming. Okay, so basically we are going to start our lectures now in the topic known as Java. So in the I.C.S.E. syllabus, our main target will be the Java programming and to learn about the syntax and the logics building in the programming language known as Java. So let us start our topic. So before going to the coding section, we have to learn a little basics about the Java, how the Java was built, what is the core concept of Java behind, okay, in the programming. So let's see in the board, we are having some lectures over here with concepts over here. Just go through it. Introduction to Java programming. First of all, let me remind you all, programming languages are of different types. First generation programming language, second generation programming language, third generation, fourth generation and the fifth generation. So this Java programming language belongs to the third generation programming language. ये जो Java है, Java third generation programming language के अंदर belong करता है. फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो शॉर्ट हैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंट होता है, उसमें पाइथन आपका इंक्लूड होता है. बट when we talk about Java, Java is a part of third generation programming language. And also लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर के एक बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो बेसिकली दिस जावा इज अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे ज़्यादातर प्रोग्रामिंग हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट के माध्यम से करते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उप्स की कैटेगरी में रखा गया है. चलिए, आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके डेवलपर का नाम याद रखना, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस, आईसीएसई एग्जाम में क्वेश्चंस 9th में क्वेश्चंस आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, मल्टीपल चॉइस में, हु इज द डेवलपर ऑफ जावा. तो बेसिकली जावा की डेवलपमेंट की कहानी शुरुआत होती है 1991 में. जेम्स गॉसलिन सन माइक्रो सिस्टम्स के लिए काम करते थे. व्हेन जेम्स गॉसलिन वाज वर्किंग फॉर द सन माइक्रो सिस्टम्स, सो he developed the Java programming language there, okay, with his colleagues. And initially the programming language was known as Oak. The concept of this name Oak came from the oak tree which was outside present near the Goslin's office. And later on development of Java was continued, and now Oracle Corporation is the owner of Java, who is taking the further developments and the take care of this Java language. Now see, so this is a concept. Basically we have to know the founder of Java, that is James Gosling, very good developer and very good personality, also widely used. Now why is this Java used? Very important. Widely used for four things are there. Desktop application. Now when I talk about desktop application, there are different types of applications. One of them are GUI based applications, Windows based applications. That applications are built with the help of the framework known as Swing. Okay, Swing and AWT. The desktop applications are built. Now after a mobile apps, today's generation we are working on the apps only. Starting when we are switching our phone, we are seeing multiple applications on the screen. For example, dialer, messaging application, WhatsApp, okay, Instagram, camera, okay, contacts applications. So multiple applications are there, real-time applications are there that are made with the help of this Java language. And other languages also are there. Flutter is also there, Swift is also there, and Kotlin is also there. But basically, primarily when we talk about Java, Java is basically used for the application development. Now web applications, there are multiple frameworks of Java which are used for this web applications. Now games and enterprise software, very important. Java is also used for the games and enterprise related software. Now let us come further in our today's lecture, that are the features of Java. Very important features. In exam questions may come into 2 marks. What are the features of Java? And we should know about the features of Java because we are going to start our journey in the further lectures of this Java, and whole 9th and 10th will be going to learn about this Java only. Okay. Now very important feature of Java is it's very simple. Okay, it's very simple. People say that Java is very complex. Yeah, I'll say Java is very complex when we don't understand the logic, when we don't understand the way of writing the syntax, when we don't understand how to write and how to code and when to write what. So when things are clear, Java becomes simple and it's very easy. Once you start code,
आप एक साथ शुरू करिए लिखना, चीज़ों को समझिए, वन बाय स्टेप एल्गोरिदम्स को लिखिए, कोड कीजिए, लॉजिक बिल्ड कीजिए, मिस्टेक्स होता है एरर को फिक्स कीजिए, इट विल बिकम अ सिंपल फॉर यू. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. The feature is object oriented. As I have taught you all, it is fully based on the concept of OOPS. So basically this OOPS stands for object oriented programming system, and this Java is also a fully object oriented programming language, my dear students, and the security of this programming language is very high, okay, due to the facility of OOPS. After that, this is a platform independent. What is the meaning of platform independent over here? Platform independent का मतलब होता है, my dear students, write once, run anywhere. Means it's not compulsory that जिस सिस्टम में आपने प्रोग्राम को लिखा है आपको उसी में रन करना होगा, like C++. Okay, Turbo C++ is an application. Once you write the program inside that, you have to run the application there only. But in Java, it's not like that. आप प्रोग्राम कहीं पे भी लिखिए, कहीं पे भी रन कर लीजिए, up to you. Okay, that's a very good feature of this Java. Write once, run anywhere. This is a platform independent. After that, secure, very highly secured programming language. Okay. After that, robust. Error handling is very easy over here. You can easily find the errors, because see, once you write the program, it's not that every time you will write the program and all the programs are correct in that way. Once you run the program in the compiler, you will be getting some errors. Maybe the semicolons are left, maybe the brackets you have not given, maybe the block of quotes you have not decided properly, maybe the logic is wrong over there. Okay, maybe the variable declaration is wrong, data type is wrong. So in that case, it is very robust. You can handle the errors very nicely over here. After that, multi-threaded. This multi-threaded concept we'll be learning later on. Okay, this is basically used for threading based programming. Okay, basically used when we are creating bigger applications, bigger softwares. There the concept of multi-threading is widely used for the good level of software building. After that, let us learn about the working of Java. Java काम कैसे करता है, वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको हम लोग सिमेंटिक्स बोलते हैं कंपाइलर की भाषा पे. Once you will go to your higher classes, you will be learning about a concept known as compiler design, and in that compiler design you will be getting to know that हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. होना भी चाहिए. अब हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, घर आते हैं घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, दैट को हमको फॉलो करना जरूरी है. अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हम प्रोग्रामर नहीं कहला पाएंगे अच्छे. तो हर एक चीज का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है. अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो प्रोटोकॉल बोलेंगे, ठीक है. तो जावा के भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, उनको सिमेंटिक्स बोलते हैं कंपाइलर की भाषा पे, ठीक है, भाषा में. चलिए, वर्किंग ऑफ जावा. जावा का कोड लिखा हमने, जावा का कोड हमने कंपाइलर में लिख दिया, एंड दैट कोड इज नोन एज द सोर्स कोड, ठीक है. वो कोड को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स कोड बोलेंगे. नाउ दैट कोड इज saved into the computer as a form of .java file, and that .java file, then the compiler. What is a compiler? Very first thing when we have to understand, compiler is a program. Compiler is a program into the computer which converts the high level source code into machine code 0 and 1s. My dear students, once again I am repeating the thing that the compiler is a software application or a program which converts the source code into machine code, that is the 0 and 1 at once. और उसी के विपरीत अगर हम बात करें in opposite way, the interpreter is also a program. It is also converting the high level code into the source code into the machine code 0 and 1, but line by line. So which one is faster? The compiler is faster over here, because once it is reading the whole program and it is generating the error once in the screen, so that the user or the programmer can easily find out the errors and can fix it out in the screen. Now compiler is converting what, the bytecode. This is the bytecode into the .class file. Okay, bytecode is the intermediate code over there, okay, which is compiled. When it is compiled, compiler converts it bytecode .class file. This code is .java file is converted into the bytecode, that is the .class file.
and that bytecode runs on JVM. And now one more new term is coming over here, JVM. JVM is what? Java virtual machine. It's not a physical machine, it's a virtual machine giving a space, giving an area to run the Java program. Virtual machine. Here only our Java programs are run. Now JVM makes platform independent. That's the phenomena over here, my dear students. WORA, WORA, platform independent कर रहा है किसको? Java को कौन? JVM, Java Virtual Machine. Now ये पूरा प्रोसेस होता है. फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं इस चीज को. What happens when the Java program you are writing in the compiler? That program is saved into the form of .class file, and that .class file is now compiled into the .java file, and .java file is converted into the .class file, and later on it is converting into 0 and 1s, and then your computer is able to understand what the concept you have written in the program. And one more thing I want to tell you all, that Java is a language which is compiled as well as interpreted. Okay, Java use a compiler also as well as an interpreter also. That's why Java is very fast. Okay, whenever he needs a compiler, he will use the compiler, and when he is the interpreter, he will, but at a specific phase of compilation. Okay, not every time or anywhere. Everything has a process by process phase. Now, key terms. Now, what are the key terms used in Java programming? Very important. Java is an object-oriented programming system. Already in the earlier time we have learned about it. So concept of OOPS will also be working over here. What is class? So class is the object factory. Class एक जगह है जहाँ बच्चे वहाँ पे object बनते हैं. हम इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लोज इनसाइड दिस पर्टिकुलर एरिया, दैट्स द क्लास ओवर हियर. ओके, एंड दूसरा चीज बात करते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लासेस. इंस्टेंस ऑफ क्लासेस मींस ऑब्जेक्ट, जो क्या क्लासेस के अंदर क्या अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है. ओके, डेटा मेंबर्स अवेलेबल है, दे आर द ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर. नाउ जेवीएम, जेवीएम इज व्हाट? रन्स जावा प्रोग्राम. जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जेवीएम काम करता है. ठीक है. जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, ये इस्तेमाल होता है कोडिंग करने के लिए. व्हेन यू आर राइटिंग द जावा प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर, द जेवीएम जेडीके gives you the interface to write the Java program. Development kit है, it's a kit, combination of elements that is helping you out to write the Java program over here. And JRE, very important, JRE, Java Runtime Environment for running. अब कोई तो जगह चाहिए जहां पे आपका प्रोग्राम रन करेगा. कोड भी लिख लिया हमने, ठीक है, कंपाइल भी करा लिया हमने, तो आउटपुट भी तो देखना पड़ेगा. आउटपुट कहाँ, किसके माध्यम से देखेंगे, किसकी मदद से देखेंगे? तो दैट इज द JRE. JRE इज द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट यूज्ड फॉर रनिंग द जावा प्रोग्राम. So this was the basic lecture of Java program. Okay, now we will learn how to write a Java program of adding two numbers. Let's see. Before adding two numbers, let's see the program how to print hello world on the screen with the help of Java language. Now see, let us see. So now we'll see how to print hello world using the Java language. First of all, as we know that Java is a object-oriented programming language. So very first thing that we'll do, we'll start with the keyword known as public class, and this is your class name, EX. Okay, public is a access specifier over here. We'll be going to learn about access specifier in our higher lectures. Okay, don't be afraid of that. Public is basically till what reach your data should be visible, and this is the class keyword, and this is the class name over here. After that, we'll open a curly bracket over here. Basically, curly brackets are used to write a block of code. It is used to write a block of code. After that, we'll write public static void main string args. So now see again a curly bracket over here. Now very first thing that you have to focus over here, my dear students, is that public class and your class name. First of all, public class, this all will be in lowercase syntax. Okay, basically Java is a case sensitive language. Okay, here uppercase and lower cases are different thing. When I write class, CLASS,
तो class is a different thing, and when I write capital C and LASS in the small letters, that will be a different thing over here. So public and class, they both will be in the small letters. Like that, public, static, void, main, all will be in small letters, and static S will be only capital and rest will be small. These are the big brackets open, big bracket close, parenthesis open, parenthesis close. Then the block of code over here. Then for printing a line in the Java program, we write the line known as system.out.println. Okay, what is the line to print a statement on the screen? That is the system.out.println. System.out.println, as well as you can use system.out.print. They are having a little difference over that. System.out.println is used for printing the statement on the next line, and system.out.print, when I write print only, ln I am removing, ln हम remove कर देते हैं, तो वो सेम लाइन पे ही प्रिंट करते चला जाएगा. तो हम यहाँ पे अभी ln ले रहे हैं. स्टार्टिंग इनिशियल प्रैक्टिसेस आर देयर टू यूज ln ओवर हियर. ओके, तो शुरुआत के समय पे आप अभी ln इस्तेमाल कीजिए. लेटर ऑन प्रैक्टिस बढ़ते बढ़ते आप जगह पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग आपकी सोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कैसे सॉल्यूशंस को निकालते हैं, वो आपकी सोच है. कैसा आप सोचते हैं वैसा आप लिखते हैं. यहाँ पे डजंट मीन दैट बुक में जो लिखा हुआ वही हम लिखेंगे. जरूरी नहीं है कि जो बोर्ड पे हम जिस तरीके से प्रोग्राम लिख रहे हैं वही आप एग्जाम में लिखे. नहीं, प्रोग्रामिंग आपकी सोच है. जैसा क्वेश्चन बोलता है, जैसा टर्मिनोलॉजीज यूज करने के लिए क्वेश्चन बोलता है, आप क्वेश्चन को देखिए और उसका सॉल्यूशन अपने माइंड के अनुसार प्रोग्राम को लिखिए. बट आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी मैटर करके चलना पड़ेगा. आफ्टर दैट, व्हेन आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड क्या है? हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है. हेलो वर्ल्ड इज व्हाट? स्ट्रिंग. पढ़ेंगे इसके बारे में आगे जाके लेक्चर्स में कि स्ट्रिंग क्या होता है. स्ट्रिंग बेसिकली आर द टेक्स्ट विच आर इंक्लोज इनसाइड डबल कोटेशन मार्क. ठीक है, स्ट्रिंग एक बड़ा सा टेक्स्ट होता है. ठीक है, बड़ी सी लाइन होती है. ठीक है, जिसमें जो कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर इंक्लोज होता है. मतलब उसके स्टार्टिंग में भी डबल कोटेशन मार्क होंगे, एंड में भी डबल कोटेशन मार्क होगा. पढ़ेंगे इसके बारे में, डरने की कोई बात नहीं. जस्ट एक इनिशियल्स बता रहा हूं आपको कि जावा प्रोग्राम एक्चुअली लिखा कैसे जाता है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हेलो, हेलो स्पेस वर्ल्ड, डबल कोटेशन क्लोज्ड, डबल कोट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन दिया. आफ्टर दैट, अब देखिए इसका मतलब क्या. उसके बाद आप पहले मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे, उसके बाद क्लास को क्लोज करेंगे. अब इस प्रोग्राम को थोड़ा समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं. अगर आपने पाइथन पढ़ा होगा क्लास 8 में, या कोई भी अदर लैंग्वेजेस, या तो आपके स्कूलों में जावा पढ़ाया गया होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को जान रहे होंगे. ठीक है, कैसे हम लोगों ने लिखा है. बेसिकली क्या किया, पहले तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा हुआ है. ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किया. देन क्लास कीवर्ड इस्तेमाल. क्लास एक कीवर्ड है, यहाँ पे प्री डिफाइंड वर्ड है जो जावा में पहले से ही लिखा हुआ है. ठीक है, हम इसको एज अ वेरिएबल नहीं इस्तेमाल कर सकते. दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्लास नेम. ये क्लास का नेम है. ठीक है, इस क्लास के अंदर के सारे आइटम्स है. ये आपका मेन फंक्शन है. पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन, स्ट्रिंग, आर्गुमेंट्स. ये स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ता है. ये क्या है? हमारा मेन मेथड. ये हमारा मेन मेथड होता है. व्हाट इज द यूज ऑफ मेन मेथड? मेन मेथड इज यूज्ड टू इन्वोक द होल प्रोग्राम. ये पूरे प्रोग्राम को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. देखिए, जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तब पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन, ये जो लाइन है वो नीचे लिखा जाता है, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच को फॉलो कर रहा है. अभी टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है. ठीक है, क्योंकि फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी प्रोग्राम लिख रहे हैं अभी हम लोग. नाउ ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड. दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, है ना. तो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, इसके अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया अपने लाइन को system.out.println. system.out.println, ब्रैकेट ओपन किया. ये ब्रैकेट व्हाटएवर वी वांट टू राइट, वी हैव टू राइट इन द parenthesis only. दिस इज नोन एज parenthesis. This is known as parenthesis, and this is the string over here what we want to print on the screen in the Java. Understood? And this semicolon is known as termination सिंबल यूज टू टर्मिनेट द लाइन, है ना. जैसे फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, पूर्ण विराम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, उस तरीके से प्रोग्रामिंग में हम लोग सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और ये जितने ब्रैकेट्स हमने खोले थे, जैसे ये मेन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो गया और इधर हमारा क्लास का ब्रैकेट क्लोज हो गया. तो ये हमारा सिंपल सा आउटपुट हमें क्या मिलेगा स्क्रीन पे? हमें आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड. ये हमारा आज का जावा लेक्चर था. तो आई होप स्टूडेंट्स दिस विल बी अ वेरी गुड लेक्चर फॉर यू ऑल, है ना. एंड
I will request you all to share your video to all your friends and keep the video link on your status of your social media accounts. Share your video, like the video, and we'll be creating new content for you every day. So get connected with our channel, subscribe our channel, and we need a support.